So we are discussing third point. So if the cure is from center to circumference or center to periphery, then that cure will be the highest ideal of cure. But for that cure, the principles should be fixed that we have seen. एक सेकंड ना. You have the idea about that Hering's law of cure, na? In the first year, you have learned that Hering's law of cure. माहिती है कि नहीं माहिती? माहिती आहे ना हेरिंग्स लॉ ऑफ क्युअर की सांगायचा परत? अरे से येस और नो. Am I audible or not? Yes. So this is this is the Hering's law of cure, that is from above downward, from within outward, that is from more important organ to less important organ. Then the reverse order of their appearance. This is the law or this is the principle of cure given by Hering. So the Kent said that if you are following all these things, then this cure is the highest ideal of cure. We will move further. It is thus, he knows that the patient did not merely get well in spite of the treatment, but that he was cured by the action of the remedy. So when you are giving the similar medicine to the patient, then that physician should know that treatment alone will not cure, but at the same time the action of the medicine, the action of that remedy is more important, and hence the action of the medicine should be from center to circumference. That medicine should remove the symptoms by these law. If the homeopathic physician goes besides the patient, that is in the IPD that we are discussing, upon observing the onset of symptoms and the course of disease. So this is the new terminology to you, onset of the disease or the onset of symptom. तो हम पूछते हैं ना कि कैसे हो गया या फिर कब हुआ. सो ही से अगर किसी का सडनली पेट खराब होता है तो यू आर आस्किंग कि कब हुआ, कितने बजे हुआ, कैसे हुआ. सो ही दैट पर्सन विल गिव यू द कॉज, दैट पर्सन विल गिव यू द टाइम एंड डे. तो वो पहले बोलेगा थोड़ा थोड़ा ना मेरा पेट दुखना शुरू हो गया था दोपहर से ही, एंड देन इन द इवनिंग सडनली आई हैव वोमिटेड. सो ये जो था दैट इज द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम. एंड कोर्स ऑफ द डिसीज मीन्स वो बोलेगा कि दोपहर में थोड़ा पेट दुख रहा था पहले, फिर उसके बाद आई हैव वोमिटेड एंड देन सडनली आई एम हैविंग अ लूज मोशन एट द नाइट. सो दैट इज द कोर्स ऑफ डिजीज. और फिर वोमिटिंग, लूज मोशन और पेट दुखना ये शुरू हो गया, दैट इज, तो ये साइकिल हो गई मेरी. सो दैट इज द कोर्स ऑफ डिजीज. सो वेन एवर यू आर आस्किंग द पेशेंट, सो यू हैव टू आस्क अबाउट द ऑनसेट कि कैसे शुरू हुआ, कैसे डिसीज प्रोग्रेस हुआ. sees that the symptom do not follow this order after this remedy. अब वो 3 सिम्टम्स जो उसने आपको दिए हैं कि पहले मेरा पेट दुखना शुरू हुआ, देन आई हैव वोमिटेड एंड देन आई एम हैविंग द लूज मोशन. तो ये जो 3 सिम्टम्स है ये जाने कैसे चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस. एंड इफ जो पहले आया था दैट फर्स्ट कम लास्ट टू गो, जो लास्ट आया वो पहले जाना चाहिए. दैट इज द ऑर्डर ऑफ द क्यूर.
तो इसके पहला जो इसका लास्ट सिम्टम था दैट इज लूज मोशन, ये क्रिटिकल था क्योंकि अगर इसको लूज मोशन 7 से अगर ज़्यादा हो गए तो उसको सलाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसके जो वाइटल फ्लूइड्स है वो पूरे उसके बॉडी से निकल जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा वहाँ पे, एंड हेंस वी हैव टू ट्रीट दैट लास्ट सिम्टम फर्स्ट। तो ऑर्डर ऑफ क्योर कैसे होना चाहिए, द लूज मोशंस जो थे वो पहले उसके ठीक होने चाहिए, देन द वोमिटिंग उसके रुक जाने चाहिए, एंड वंस द वोमिटिंग एंड लूज मोशंस दे गेट क्योर, ऑटोमेटिकली उसका पेट का दर्द बंद हो जाएगा। सो दिस इज द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। तो द रेमेडी जो आप दोगे इट शुड फॉलो दैट ऑर्डर। तो ऐसे ही रेमेडी हमको देनी चाहिए कि विच विल हैविंग these symptoms which is similar and which is stronger, और ये मेडिसिन अगर रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस से अगर ये क्योर कर रही है, so that will be the highest ideal of cure and your selected medicine is properly similimum. He knows that he has had but little to do with the course of things. So ये सब physician ने ध्यान में रखना जरूरी है. So he should ask the onset of symptom, the course of the disease, and when he prescribe the remedy, the symptoms should follow the order. If, on the contrary, you observe after the administration of medicine that the symptoms take the reverse course, then he knows that this medicine he had do with it, because if the disease were allowed to run its course, such a result would not take place. लेकिन अगर मेडिसिन पहले पेट का दर्द कम कर रही है लेकिन लूज मोशन और वोमिटिंग वैसे ही है, सो दैट मीन्स दैट मेडिसिन इज नॉट एक्टिंग प्रॉपरली, वो रिवर्स ऑर्डर से जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो क्रिटिकल पहले सिम्टम है वो पहले ठीक होना चाहिए। दैट मीन्स दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज, दैट इज नॉट क्या बोलते हैं उसको, वो डिसीज वहां पे रुक नहीं रहा है, दैट डिसीज इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग, दैट कॉज इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग इनसाइड द बॉडी, एंड हेंस द मेडिसिन शुड बी एक्ट फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। अब ये जो लूज मोशन का जो कारण है विच इज प्रेजेंट इनसाइड, and hence that medicine should act in the on the intestine, so that intest जो peristaltic movement उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो उस पर act करके उसको पहले कम करेगी वो, then the reverse peristaltic उसको कम करेगी। as the peristaltic movement will be under the control, the pain will be disappear very soon. So in this way that medicine should act on the center, not on the surface. pain कम कर दिया यानी वो medicine is not working properly. The progression of the chronic disease is from surface to the center. That means तो जो that disease अभी कैसे जा रहा है, it will entering into your internal economy. अगर reverse order अगर medicine दे रही है, so that means that disease will now entering into the internal economy और वो disease बढ़ते ही जाएगा बाद में। All chronic diseases that have their first manifestation upon the surface and from that to the innermost of the man. So ये जो chronic diseases होते कैसे हैं, because the patient is not getting the proper treatment in the acute one. Continuously the vital force is throwing the manifestations on the surface, but if that person is doing the palliation from the surface, then it will be go inside and this will leads to the chronic disease. सो ये सरफेस पे वाइटल फोर्स हमको चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि समथिंग सम प्रॉब्लम इज देयर इनसाइड योर बॉडी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप उसको अगर ठीक नहीं कर रहे हो फ्रॉम द सरफेस, देन इट विल ग्रो इन द इनर मोस्ट ऑफ द मैन। Now in the proportion in which they are thrown back upon the surface, it is to be seen that the patient is recovering. लेकिन उल्टा क्या है उसका, if the patient is having the external manifestation during the treatment, that means the patient is recovering. So he has quote here the good example of rheumatism that we will see, so that you will get the clear idea of these two lines. कि chronic diseases they are travel from the outer surface to the inner surface, and hence the cure should be from inner to outer. During the treatment, while you are treating the patient, if the old symptoms reappear, psoriasis फिर से उसको होता है जो पुराना था, एक्जिमा उसको फिर से हो रहा है, फिर से उसको वाट्स आ रहे हैं, फिर से उसके ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो रहे हैं, फिर से उसके नेल पे धब्बे आ रहे हैं या वाइट पैचेस आ रहे हैं, while you are treating the asthma, while you are treating the pneumonia, this is a good sign, that means the patient is recovering.
Here it is that the turmoil spoken from above follow the true homeopathic remedy, and the ignorant upon the surface, in the extremities, upon the skin, nails and the hair. So we should ignore that surface manifestation. We should concentrate on the heart, we should concentrate on the chest, we should concentrate upon the recovery of these vital organs. ये जो है extremities, जो skin पे, nail पे, that is not the important, but we have to save our vital organs to become that acute disease into the chronic one. Hence, you will find that these parts became a disease when the patient are getting well and hair falls out or the eruptions come upon the skin. So, डिसीज अगर ठीक तरह से क्योर होता है, सो ये एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशन जो दिखेंगे आपको, बहुत बहुत बार ये दिखते हैं. आफ्टर द क्रॉनिक डिसीज द पेशेंट विल कंप्लेन कि मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये हेयर फॉल रुकाओगे देन दिस विल लीड्स टू द क्रॉनिक कंडीशन. हेयर फॉल आपको डाइट से, एक्सरसाइज से, प्रॉपर डाइट एंड रेजिम से ही उसको आपको ठीक करना है. इफ यू आर गिविंग द मेडिसिन फालतू चीजों के लिए, तो दैट माइजम विल increase inside. Now this is the example. In case of rheumatism of the heart, you find if the patient is recovering, that these knees became rheumatic, and he may say now the patient is of rheumatism. Rheumatism means the pain in the joints. तो उसका joint कौन सा affected है? Knee joint. The doctor, I could walk all over the house when you first came to me, but now I cannot walk, my joints are swollen. So उसको rheumatism था. Rheumatism means the inflammation उसको वहाँ पे था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ pain था. Now the joints are swollen. If the doctor does not know that, that means recovery, he will make a prescription that will drive the rheumatism away from the feet and the knees. It will go back to the heart and the patient will die. And it need hardly be stated that the traditional doctor does not know this, as he resorts to this plane as his regular and only plane of treatment, and in the most innocent way kills the patient. So क्या हुआ था पेशेंट को पहले? The patient is not able to walk, but in the second time that patient is having the swelling on the knee joint. So in this condition, अगर वहाँ traditional doctor या कोई old school physician अगर जाता है, so he will treat that rheumatism. So क्या होगा? That will affects the heart, and he will kill that patient very innocently, because उनको पता नहीं है कि ये नी जॉइंट का जो स्वेलिंग है या जो पेन है, अगर ये पैलिएट हो जाएगा बार 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 बाय गिविंग द एंटीबायोटिक्स और बाय गिविंग द स्टेरॉइड्स, इट विल ग्रो इनसाइड. जो माइजम था, सोरा एंड साइकोसिस, इट विल ग्रो इनसाइड एंड फाइनली इट विल अफेक्ट्स द हार्ट. दैट इज अ रूमेटिक हार्ट डिसीज हम जिसको बोलते हैं. नाउ यू विल learn the pathology of it in the systemic pathology. तो वो पहले नी को अफेक्ट करेगा and then it will affects the heart. It will eat the knee first and then it will kill the heart. ऐसा कुछ जो भी एक proverb है वो आप सीखोगे systemic pathology में. So in this way innocently he will kill the patient. This is a simple illustration of how it is possible for the interior of man to cease to be affected and exterior to be affected. तो यहाँ पे क्या करना चाहिए था? We have to treat that knee joint with the help of similar and stronger medicine. But traditional doctors, they are using the dissimilar medicine and they are causing the palliation, and unnecessarily that patient may have the heart complaints. It is maybe impossible for a man to entirely cure. It may be impossible for the state to pass off. But that is the direction of passing off and there is no other cause. ठीक है, उसका because of the degeneration of tissues हो गए है, because of the age, वो क्योर नहीं हो रहा है या फिर वो स्टेज उसकी पास भी नहीं हो रही है, ठीक है, बट द डायरेक्शन ऑफ द क्योर शुड बी प्रॉपर. अदर इफ द डायरेक्शन ऑफ द क्योर इज रॉन्ग, then this way leads to the internal grievous diseases. If the patient is incurable,
while the means user are mild, he may experience a great suffering in the evolution of disease and the course of partial recovery. Don't treat that patient with the help of the violent medicines here. Give him the partial recovery, but don't palliate that case. To him, it may not be a mild, but the means that where used were mild. In acute diseases, we do not observe so much distress after prescribing as we see in the old incurable diseases. In the deep-seated chronic complaints that have existed a long time, acute disease में हमको result बहुत जल्दी मिल जाएगा, but in the chronic diseases they are distressing. Their prescription is also difficult because we have to take the previous history, and on the basis of that we have to give the medicine, पहले acute proved medicine, then the miasmatic medicine or the constitutional medicine, because it is a deep seated. बहुत सारे organ, बहुत सारी history हमको लेनी पड़ती है, organ उसमें involved है, and hence it is very cautiously हमको वहाँ पे prescription देना पड़ता है. The return of the outward manifestation upon the extremities are noticed in such cases where they have suppressed. That I have told you previously कि old symptoms reappear again. That means वो suppressed थे, अब वो फिर से अगर आ रहे हैं, so that is a good indication. That is the Kent का ही ये observation है. We will learn the Kent's 12 observation in the coming few months. There you will see कि जो suppression है वो अगर फिर से आ रहा है, so that is a good indication. To illustrate, there are many patients who have the rheumatism in hands and feet, wrist, knees and elbow, who have been rubbed and stimulated with the lotions and the strong liniment, chloroform, evaporating lotion, cooling application, until the rheumatism of the extremities has disappeared to great extent. But every physician knows that as the disappearance of the rheumatism progress, the cardiac symptoms are likely to occur. So rheumatism या फिर जिसको कोई भी अगर ये जनरली ये आफ्टर 50 या आफ्टर 55 के एज में ये कंप्लेंट शुरू होते हैं. So that person is having the pain in all the small and the bigger joints or the larger joints. So that is the rheumatism. अब ये rheumatism कम करने के लिए कोई तेल लगाता है, कोई लोशन लगाता है, कोई स्प्रे मारता है वहां पे, so that the pain will decreases. कोई एंटीबायोटिक देता है, लेकिन what will happen once it will enter or once it is progress inside, it will affect your heart. When the patient is prescribed for the rheumatism of the extremity, it will affect the heart. It will not relieve. That is a true, and every condition that has been upon the extremities, which are treated by the local treatment, it will go inside, and surely that person will come and says that now you have treated my rheumatism nicely, but now I am having the heart complaint. But the physician who thinks most of the pocketbook, it will say, if I don't give you him liniment to put on the limb, he will go off and get another physician. लेकिन वो liniment या antibiotic क्यों देते हैं कि ये पेशेंट समझेगा कि इसने कुछ भी मुझे मेडिसिन नहीं दी है, मेरा रूमेटिज्म ठीक नहीं हुआ है, वो दूसरे फिजिशियन के पास चला जाएगा. बट ये सब देखे एंटीबायोटिक्स या लोकल एप्लीकेशन, ये सब वायलेंट मेडिसिन देखे वो क्या कर रहा है, ही इज डूइंग दैट डिसीज इविल, वो डिसीज को और ज्यादा डेंजरस बना रहा है. You had better trust to the intelligence of humanity and trust that he will say and to be cured. लेकिन हमको concentrate कहाँ पे करना है, he has to be cured without transforming the disease external to the internal way. So the local treatment जो आप दोगे नी कंप्लेंट के लिए या रूमेटिज्म के लिए, you will have to find out that it will not enter inside the body. It should not disturb the internal economy of that person. Otherwise, it will come forward in the form of the grievous disease. Clear? समझा है? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So today I think we will stop here. Tomorrow again we will continue this and we will finish it. Okay? Okay. Tomorrow again we will discuss this third point and we will finish it off. ठीक है? आज का समझा है ये
the external manifestations should be treated properly. If you are treating it with the violent medicine by the local application, it will enter into the inside the body and it will start affecting the internal vital organs. And in that condition, the physician is not able to cure that patient. So if that patient is on the पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है और फैक्टर्स दूसरे जो है दे आर नॉट हेल्पिंग टू क्योर दैट पेशेंट, कीप दैट पेशेंट ऑन द वे ऑफ रिकवरी, लेकिन वहाँ पे पैलिएशन या सप्रेशन मत करो. दिस इज गिवन बाय डॉक्टर केंट. आदित्य पार्टी कॉलेजला आल्यावर दिली तरी ओके. अंडरस्टूड Yes, ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am.